जी चैप्टर नंबर 7 एनिटीज। आप अल हसन वालों की ये बुक परचेज कर लें फॉर बीकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम, और ये पब्लिशर है जी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी। बट चैप्टर नंबर 7 एनिटीज इंट्रोडक्शन। इन अवर सोसाइटी वी सी अराउंड अस दैट लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल वेरीज फ्रॉम एरिया to area. We see around us that living standards of people varies from area to area. That is, some of the people are very rich, some are rich, but most of the people are poor. The rich and the clever people always try to make their money more and more through different sources. Especially they use these sources in which the risk factor is almost zero. These risk-free sources are banks, national saving centers, private companies, etc. Therefore, these people deposit a lump sum amount of money at a particular rate of interest and get a double, triple amount of money after a fixed period. But many people are not in a position to deposit a lump sum amount at present for getting a big amount in future. Therefore, natural questions arises that how can they get a large amount in future. To overcome this situation, people normally save or deposit small amount of money regularly for some period. These payments or deposits may be weekly, monthly, half yearly, yearly, etc. We shall study such regular deposits in details in this chapter. Annuity. We पहले annuity की definition है. The word annuity is derived from Latin word annuitas, which means after fixed time. After a fixed time. Therefore, we can define annuity as a sequence of payments of equal amount made at equal intervals of time is called an annuity. भैया जरा definition याद रखनी है. A sequence of payments of equal amount made at equal intervals of time is called annuity. The intervals may be weekly, monthly, semi-annually, annually, etc. G. In short, we say that annuity is the sense of periodic payments. By annuity is a series of periodic payments. By annuity is a series of periodic payments. G. Again, payment intervals. The time period between two successive installments of an annuity is called payment interval. It is also called payment period. The term of annuity. The time period between first and the last installment of an annuity is called term of annuity. The time period between first and the last installment of an annuity is called a term of annuity. Again, annuitant. A person who receives the payments of an annuity is called annuitant. For example, suppose Ahmad is to pay rupees 20 monthly installment of rupees 500 to Bashir. Suppose Ahmad is to pay 20 monthly installment of rupees 500 to Bashir. Thus, in this annuity, installment
installment is of rupees 50. Payment period is 1 month. By term of annuity 20 months, or Bashir is the annuitant. By types of annuity, we can divide annuities into two groups. एक है annuity based on the time of payment, annuity based on time of payment. By annuity based on number of installments. We shall discuss only annuities based on time of payment in details in this chapter, and a title and a little title and a little bit touch to perpetuity. थोड़ा सा हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे. आगे annuities based on time of payment. There are two major types of annuity based on time payments. एक है ऑर्डिनरी, एक है ड्यू. भाई दो तरह के एन्युटी डिस्कस करेंगे. एक है एन्युटी ऑर्डिनरी और दूसरा है एन्युटी ड्यू. पहला है एन्युटी ऑर्डिनरी. भाई एन्युटी ऑर्डिनरी, एन एन्युटी इज सेड टू बी एन्युटी ऑर्डिनरी इफ पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ इंटरवल. इट इज आल्सो कॉल्ड एन्युटी इमीडिएट. भाई एन एन्युटी इज सेड टू बी एन्युटी ऑर्डिनरी. भाई एक एन्युटी को आपने एन्युटी ऑर्डिनरी कहना है इफ पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द इंटरवल. इफ पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द इंटरवल, इट इज आल्सो कॉल्ड एन्युटी इमीडिएट. जी देखिएगा भाई, अगर ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ऑर्डिनरी होता है, इसमें पेमेंट्स क्या करते हैं एट द एंड. भाई इसमें पेमेंट्स क्या करनी एट द एंड. जी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट गेन फ्रॉम बैंक एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. भाई सैलरी ऑफ एम्प्लॉयड इज पेड एट द एंड ऑफ द मंथ. डेली वेजेस ऑफ ए पर्सन इज पेड एट द एंड ऑफ द डे. आगे एन्युटी ड्यू. भाई कहते हैं एन एन्युटी इज सेड टू बी एन्युटी ड्यू इफ पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल्स. भाई अगर पेमेंट स्टार्ट में करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं एन्युटी ड्यू. जी मंथली रेंट ऑफ ए हाउस पेड इन एडवांस. ट्यूशन फी या ड्यूज पेड इन एडवांस इन स्कूल और कॉलेज एटसेट्रा. आगे अमाउंट ऑफ एन्युटी. अमाउंट ऑफ एन्युटी जी बजाना देखें. अमाउंट ऑफ एन्युटी. द अमाउंट ऑफ एन्युटी, द अमाउंट or sum of the annuity is the total of all payments at the end of the annuity. At the end of the annuity, it is also called future amount of the annuity and is denoted by S. G. देखिएगा amount of an annuity. The amount or sum of an annuity is the total of all payments at the end of the annuity. It is also called future amount or it is also called future amount of the annuity and is noted by S. जी आ गया sum of ordinary annuity. Sum of ordinary annuity. भाई sum of ordinary annuity इसका हम फार्मूला ड्राइव करते हैं जी. भाई sum of ordinary annuity का फार्मूला क्या है? S is equal to R into 1 plus R की पावर n minus 1 over small r. भाई कैपिटल S is equal to कैपिटल R into 1 plus R की पावर n small r की पावर n minus 1 over R. R से मतलब इन्वेस्टमेंट्स जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, और S से मतलब सम ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स. सम ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स जी. एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स डिसाइड टू डिपॉजिट रुपीज 5,000 at the end of each year in the bank. कहता है which pays compound interest at the rate of 5% per annum. What will be the amount after 15 years? By what will be the amount after 15 years? By Mr. X decide to deposit rupees 5,000 at the end of each year in the bank. भाई जब at the end पेमेंट होगी ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी.
Mr. X decide to deposit ₹5 at the end of each year in the bank, which pays compound interest at the rate of 5% per annum. What will be the amount after 15 years? भाई आपने बताना अमाउंट आफ्टर 15 years क्या होगी भाई. इट इज गिवन इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रहे वो रुपीज के 5,000 भाई. एन समराद है टाइम 15 years भाई. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5/100 0.05 per annum भाई. फार्मूला हमारे पास क्या है एन्युटी ड्यू का सम ऑफ एस इज कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 + r की पावर n -1 over r भाई. कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 + r की पावर n -1 over r भाई. यहाँ पे आपने कैपिटल आर स्मॉल आर और n की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 1,80,000 जी. 1,00,000 जी 108,000 1,08,000 भाईजान 1,08,000. तो मिस्टर एक्स डिसाइड टू डिपॉजिट ₹5,000 at the end of each year in the bank. कहते हैं which pays compound interest at the rate of 5% per annum. What will be the amount after 15 years? फिर फार्मूला याद रखना, कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 + r की पावर n -1 ओवर स्मॉल आर. ये ऑर्डिनरी ड्यू का फार्मूला है जी. एग्जाम्पल 2 जी. By find the future value of ordinary annuity of ₹40,000 deposit yearly for 6 years at 8% per annum compounded quarterly. By compounded quarterly. By find the future value of the ordinary annuity. आपने क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी निकालनी है ऑफ ₹40,000 डिपॉजिट ईयरली फॉर 6 years at 8% per annum कंपाउंडेड क्वार्टरली जी. भाई देखिएगा फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ रुपीज हमारे पास का 40,000 डिपॉजिट ईयरली फॉर 6 years at 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली भाई. इट इज गिवन इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आर ₹40,000 एन हमारे पास 6 years. तो भाई आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 quarters क्योंकि 1 year बराबर है 4 quarters भाई. 1 year बराबर 4 quarters भाई. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% पर एनम. इसको भैया 4 से डिवाइड करेंगे तो पर क्वार्टर आ जाएगा 2%. तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.02 पर क्वार्टर. यूजिंग फार्मूला एन्युटी ड्यू एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला कैपिटल एस इज इक्वल कैपिटल आर इंटू 1 + r की पावर n -1 over r भाई. कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 + r की पावर n -1 over स्मॉल r भाई. कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 + r की पावर n -1 over स्मॉल r. यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और n की वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 1 to 1 6,000 जी. यह आएगा 12,16,000 जी. कहता फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ रुपीज क्या जी हमारे पास 40,000 डिपॉजिट ईयरली फॉर 5 years और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमारे पास 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली और क्वार्टरली उसको जो है ना कंपाउंड करना है जी. क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 वी हैव कहता जी फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 12 months इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 that earns an interest at 12% per year compounded monthly जी. find the amount of ordinary annuity. आपने क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 12 months पेमेंट्स ऑफ ₹1,000 that earns an interest at 12% per year compounded monthly जी. जरा देखिएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर 12 months पेमेंट्स ऑफ ₹1,000 दैट अर्न्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली जी. भाई इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रहे हैं और ₹1,000 एन हमारे पास है 12 months भाई. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है आर वो है 12% पर ईयर.
12% पर ईयर, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा 1% पर मंथ, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.01 पर मंथ आ जाएगा। यूजिंग फार्मूला कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। भाई कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर। भाई आपने कैपिटल आर, स्मॉल आर और एन की वैल्यूज पुट की एंड वी गेट 12700 जी। एग्जाम्पल 4, भाई व्हाट इज द एनुअल पेमेंट, भाई व्हाट इज द एनुअल पेमेंट पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू अमाउंट ₹1,48970, यानी कि 1,48,970 फॉर 8 ईयर्स एट जो है ना वो 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। भाई कंपाउंडेड एनुअली, भाई व्हाट इज दी एनुअल पेमेंट, आपने क्या निकालना है, व्हाट इज दी एनुअल पेमेंट पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब एट द एंड होगा तो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। ईयर अमाउंट कितनी है हमारे पास, इतनी थी फॉर 8 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, नो प्रॉब्लम। भाई सम ऑफ एन्युटी हमारे पास क्या थी, एस वो है 1,48970, भाई 1,48,970। भाई सम ऑफ एन्युटी एस हमारे पास है थी 1,48970, भाई सम ऑफ एन्युटी हमारे पास एस है वो है 1,48970 जी। आप देखें एन हमारे पास 8 ईयर्स, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 5% पर एनम, तो भाई इसको 100 से तकसीम किया तो 0.05 पर एनम भाई 0.05 पर एनम जी। अब जरा देखिएगा, वी हैव फार्मूला हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड कैपिटल आर, एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर। भाई एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। भाई आपने एस की, स्मॉल आर की, एन की वैल्यू रखी, इसको सिंप्लीफाई किया तो आर जो निकलेगा 15598.95। भाई आपका जो कैपिटल आर निकलेगा 15598.95 जी। फार्मूला याद रखिएगा ऑर्डिनरी एन्युटी का, एस इज इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। भाई सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला क्या है, कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। भाई कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। ये सम ऑफ ऑर्डिनरी ड्यू का फार्मूला, आर से मराद इन्वेस्टमेंट जो आपने किए थी और एस से मराद सम ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स जी। एग्जाम्पल 5, कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹1,000 must run in order that its amount just exceed ₹16,000 at 5% per annum compounded annually। By find the least number of years, आपने क्या निकालना है, लीस्ट नंबर ऑफ ईयर निकालना है फॉर विच एन्युटी ऑफ ₹1,000 must run in order that its amount exceed ₹16,000 at 5% per annum compounded annually जी। देखें फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, आपने एन निकालना है। भाई फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, आपने एन निकालना है फॉर विच एन एन्युटी ऑफ रुपीज हमारे पास है 1,000 रुपया जी। मस्ट रन इन ऑर्डर दैट इट अमाउंट जस्ट एक्सीड रुपीज कितनी बन जाती है 16,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इट इज गिवन दैट इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रहा है वो है 1,000 जी। भाई सम ऑफ एन्युटी हमारे पास ऐसा है वो 16,000 है जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.05। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या 0.05 पर एनम जी। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। भाई कैपिटल एस इज इक्वल टू ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला, कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर। भाई कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 ओवर स्मॉल आर।
कैपिटल एस आर और स्मॉल आर की वैल्यू पुट कीजिए। भाई सिंप्लीफाई कर वी हैव दिस। नाउ हमारे पास यहाँ पे आके क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। वी आर टेकिंग log on both sides and n will be equal to 12.04। भाई n will be 12.04। भाई n किसके बराबर होगा 12.04। भाई n किसके बराबर होगा 12.04। Thus amount of annuity will just exceed rupees 16,000 in 13 years या in 12 years। जी, the amount of annuity will just exceed rupees 16,000 in 12 years। जी, एग्जाम्पल 6 थी हमारे पास। टू सेव फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन a family decide to invest rupees 3,000 at the end of each 6 months period in the fund, paying 7% per year compounded semi-annually. Find the amount at the end of 18 years. Find the amount at the end of 18 years. जीजा देखिएगा भाई। टू सेव ए चाइल्ड्स एजुकेशन ए फैमिली डिसाइड टू इन्वेस्ट रुपीज 3,000 इन्वेस्ट किया जी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पर, ईच एट द एंड ऑफ ईच 6 months पीरियड इन द फंड, पेइंग 7% पर एनम पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 18 years। आपने अमाउंट निकालनी एट द एंड ऑफ 18 years। भाई इट इज गिवन इंस्टॉलमेंट हमारे पास आर है, वो है 3,000 जी। भाई टाइम हमारे पास एन, वो है 18 years। उसको भैया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 36 सेमी एनुअल बन जाएंगे। क्योंकि 1 year किसके बराबर होगा जी 2 6 months। भाई 2 half years बनेंगे जी। तो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8% पर ईयर। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या पर सेमी एनुअल जी 4% सेमी एनुअल जी, 4% पर सेमी एनुअल। इसको भैया 100 से तकसीम करेंगे 0.04 पर सेमी एनुअल आ जाएगा। यूजिंग फार्मूला कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n -1 ओवर स्मॉल आर। भाई कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n -1 ओवर स्मॉल आर। भाई आपने कैपिटल आर, स्मॉल आर और n की वैल्यूज पुट कीजिए एंड वी गेट 2,31,975 रुपीज। जी हमारे पास इतने पैसे आएंगे जी। वंस अगेन, टू सेव फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन ए फैमिली डिसाइड टू इन्वेस्ट रुपीज 3,000 एट द एंड ऑफ 6 months period for in a fund, paying 7% per year compounded semi-annually. Find the amount at the end of the 18 years। भाई आपने अमाउंट निकाली एट द एंड ऑफ, भाई 3,000 वो सेंड कर वो जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं जी। और जो अमाउंट निकलेगी ना वो निकलेगी 2,31,975 जी।